आप में से किसी का आज बायो का एग्जाम था? आज बायो का एग्जाम था ना शायद? एनीवन विद पीसीएमबी? नो। व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स, आदित्य? PCM, sir. पीसीएम एंड कंप्यूटर साइंस? No, sir. Physical education. फिजिकल एजुकेशन, ओके। हो गया फिजिकल एजुकेशन आई थिंक, है ना? Yes, sir. ओके, you're done then. Try this question, okay, Priya? Hi, Priya, you're late. Hamza, you also. Please be on time, है ना? Try this question. Start with calculating the number of moles of nitric acid. ठीक है, यहाँ से आप number of moles of nitric acid निकालिए. Okay, you have 11.5 gram of nitric acid is evaporated. You have the mass, nitric acid का molar mass दिया हुआ है ना? यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? You can also calculate the number of moles of nitric acid that has been evaporated, and then you subtract this number of moles from this number of moles. Then you will get the remaining number of moles of nitric acid. Okay, the remaining number of moles of nitric acid you will get, and then you can calculate the molarity. While calculating the molarity with the remaining moles of nitric acid, please remember the volume is reduced to half. So जो volume होगा final nitric number of moles of nitric acid divided by volume, that volume will be 400 ml and not 800 ml. ठीक है? You will have 1, you will get some value here 1, you will get some value here 2, you will do 1 minus 2 and you will get something 3, and 3 by 400. Okay, or rather I should say A, B, well, A minus B, you will get some C, and C upon 400 into 10 to the power 3. Then you will get the molarity. ठीक है? So you have 3 terms. इसमें से if you cannot find one of the terms, please let me know. From here you have to find A, that will be A moles. From 11.5 grams, you will get some B moles. You will do A minus B moles divided by 0.4 liter, or you can write 400 into 1000. 400 into 1000.
2 more minutes and then I will solve the question. Raise your hand if you have got A. Raise your hand if you have got A. ठीक है. Anyone else? ठीक है. Okay. Okay, fine. है ना, B भी निकल जाएगा. B में कैलकुलेट करना पड़ेगा. See, initial moles of HNO3 is equal to molarity into volume. That will be equal to what? 800 ml into 0.5 moles liter inverse. तो यहाँ से आपके पास liter inverse and liter will get cancelled. You will get 800 into 0.5, that is 400. This is milliliter. तो milliliter का milli बचा हुआ तो milli moles हो जाएगा ये, which will be equal to 400 into 10 to the power minus 3 moles. इसको आप लिख सकते हैं 0.4 moles. Moles of HNO3 evaporated will be equal to how much? The given mass upon the molar mass. 11.5 gram divided by the molar mass of nitric acid is 63 grams per mole. Grams will cancel each other and you will get the answer as how much? कितना आंसर है इसका बताइए जरा. .18? Yes, sir. 0.18. 0.18 moles. Now, molarity will be equal to 0.4 minus 0.18 divided by what will be the volume? Final volume क्या हो जाएगा बताइए? 400. 400. It is in ml. That is why I will multiply this by 1000. 1000 में ये 0 कट गया and you will have what? 0.4 minus 0.18 will be equal to how much? How much? 0.22, right? Into 10 upon 4. कितना आ रहा है आंसर? What is the answer, guys? Correct. 0.55 होगा हम सब. Okay, so I can write this as 55 into 10 to the power minus 2. Okay, so x will be equal to how much? 55. Write this down. Done, everyone? Is please tell me. All of you wrote this down? Yes, sir.
ये सवाल लेकिन एक सवाल A 6.50 molar solution of KOH aqueous has a density of 1.89 grams per centimeter cube. 1 centimeter cube is equal to 1 ml. ठीक है? And 1 dm cube is equal to 1 liter. आपके पास molality है. You have the density. You have to calculate the molarity of the solution. Raise your hand if you need some hint कि कैसे calculate करना है. Raise your hand. Okay, नहीं आप लोग को नहीं चाहिए. ठीक है, ठीक. Calculate this one. Three more minutes, guys. Let me know if you are stuck. I will give you some hints. Okay. अच्छा ठीक है. First of all, potassium का molar mass है 39. I hope you know about oxygen and hydrogen. Okay. Molar mass of potassium is 39. See, first things first. You have been given the molality of the solution, that is 6.5. That means 6.5 moles of KOH is mixed with, tell me, 6.5 moles is mixed with what? क्या मतलब होता है 1 मोलल का? 6.5 मोलल है, that means what? It is mixed with 1 kg of solvent.
1 kg ऑफ वाटर हो जाएगा, राइट? ठीक है, वेरी गुड, Yes. है ना। 1 kg ऑफ वाटर ले लीजिए आप एंड 6.5 मोल्स ऑफ KOH का मास निकाल लीजिए। विल मल्टीप्लाई दिस बाय मोलर मास ऑफ KOH एंड देन यू ऐड बोथ ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट आपको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन। Once you get the mass of solution, you will convert the mass of solution to volume. ठीक है? Once you get the volume, you have the number of moles. Number of moles कितने हैं? 6.5. 6.5 by that volume you will divide it. ठीक है? So mass of solvent is 1000 grams कर लीजिएगा. Okay, 1000 grams. Mass of solute is what? 6.5 into the molar mass of KOH. And then from that mass of solution, you will convert to volume using the density. And then once you have got the volume, you have already the number of moles. Number of moles divided by volume, you will get the molarity. Chali. Should I discuss or do you need some more time? If anyone is doing. Yes, Priya, tell me. Sir, could you give me a minute? 1 minute, okay, fine. Chali, 2 minutes more and then we will discuss it. Yes, Priya, do you get the answer? Sir, 9. That is correct, 9. See. 6.50 moles in 1 kg of solvent. That means 1000 gram of H2O has 6.5 into 39, that is K, 16, that is oxygen, and 1, that is hydrogen. Okay, so 6.5 into 56 gram of KOH. So this much amount of KOH is present in 1000 gram of water. With it is mixed with 1000 grams of water. So if you multiply this, you will get the answer 364. So 1000 plus 364 is equal to 1364. Now volume of 1364 grams of solution will be equal to the mass upon the density. Mass upon density is equal to mass by volume. So volume will be equal to mass by density. So mass by density is going to give me the volume in ml. Now molarity will be equal to 6.5 upon 0.722. This is in liters. Okay, this was in ml, this is in liters, and you will get this answer as 9. Okay, so the molarity will be equal to 9. Please note this down. What about others? Adriel, Hamza and Krishna, कहाँ तक किया था आपने? Aditya, since you have not attended, तो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि कहाँ तक किया था आपने. आज की
जो सवाल है ना वो सब आप कीजिएगा. What about you guys, Adriel, Hamza and Krishna? Sir, I found the volume of solution. अच्छा, फिर डिवाइड करना बचा था सर. Okay. What about you, Adriel? You are calculating the molarity. Okay. Actually, I hope you have noted this down then. Now, next topic is dilution. See, dilution means addition of solvent only. When you add the solvent and solvent में कोई और solute नहीं रहता है, that is the case of dilution. Now, since there is no change in the number of moles of solute, please remember what we are adding. We are adding only solvent. So the number of moles of solute is going to be the same. And that is why we can write number of moles of solute before dilution will be equal to the number of moles of solute after dilution also. So initially I have a particular solution which is having M1 as the molarity, V1 as the volume, and M1 into V1, since molarity is equal to number of moles upon volume. So I can write M into V will be equal to number of moles. So when you have M1 into V1, that is also representing the number of moles in a particular solution. Then we added some V2 volume of solvent. I added V2 volume of solvent. Now the final volume will be equal to what? V1 plus V2. V1 was the initial, we added V2. Now the final volume became V1 plus V2. What will be the final molarity? See, final molarity will be depending on the number of moles. And since number of moles before and number of moles after is same, M1 V1 will be equal to M final. That means the molarity of final solution and multiplied by volume final. So M final will be equal to M1 into V1. That is representing the number of moles divided by V final. Please write this down. The case of dilution. The most important point is this one. And M1 V1 represents number of moles. And since number of moles is not changing, so this numerator will be M1 V1, that is representing NB, number of moles of solute, divided by the final volume. Please let me know once you're done. You raise your hand once you're done writing this, okay? Waiting for Aditya and Hamza. Okay, Hamza is done. Aditya, raise your hand once you're done. If you're on laptop, you can use Control Y, I guess. I guess Control Y or Alt Y, something like that. Alt Y. Yeah, Alt Y. Aditya, are you done? Yes, sir. Acha, acha, take. Now, let us see what happens if we mix solutions. Now, when you are going to mix solution, that means initially you had a solution A, M1 V1. Okay, it has molarity M1 and volume V1. Solution B is having the molarity M2 and the volume V2. Now, both of these solutions are of the same solute.
ठीक है, it is, let us suppose it is salt or acid or base, but both of them are what? Both of them are same. Solute यहाँ पे same होना चाहिए. If solute is same, then only you are going to form a new solution and there will be no reaction happening. If you have acid and base, then वहाँ पे reaction हो जाएगा, वो mixing of solutions नहीं होगा. That will be a reaction now. It will not be mixing. Now, once you have M1V1 and M2V2 and you are mixing both of these solution, you will get M final and V final, or you can get right also MRVR, the resultant molarity of the solution and the resultant volume. The VR is going to be simple, V1 plus V2. We had volume 1, we had volume 2, you added both of them, you will get V1 plus V2, VR. Now, what will be MR? MR will be, here we had number of moles, let us suppose NB1. Here we had number of moles NB2. NB1 can be represented by what? M1V1. है ना? M1V1 will tell me about NB1 and NB2 कौन बताएगा? M2V2. And this number of moles and this number of moles, both of them are where? Both of them are in the resultant solution. Since both of them are in the resultant solution, then I will add both of these number of moles. So this M1V1 is representing NB1, number of moles from the first solution. M2V2 is representing the number of moles from, tell me which solution? M2V2 is representing the number of moles from solution B. Solution B. Solution B. This is the second solution. And this is the total number of moles in the resultant solution. And then you divide by the total volume, V1 plus V2. You will get the molarity of the resultant solution. Please write this down. समझ में आया सबको? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Okay. Aditya, what about you? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Once you're done, then you will write this question. 25 ml of 3 molar HNO3 is mixed with 75 ml of 4 molar HNO3. If the volumes are additive, that means volume को आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं. 25 plus 75 is equal to 100. ठीक है, that is the meaning of volumes are additive. The molarity of the final mixture would be what? One simple formula based है, ठीक है? All of the things you have, molarity है, volume है दोनों solutions का. You just need to plug in the values to this particular equation and calculate the molarity.
Yes, Hamza, very good. Krishna, very good. Correct. Yes, Adriel, correct. Aditya, correct. Very good. Priya, what about you? Oh, नहीं प्रिया, फिर से कैलकुलेट कीजिए. आई थिंक कुछ मिस्टेक कर दिया आपने. 25 into 3 plus 75 into 4 divided by 100, है ना? 25 plus 75 will be equal to 100. ये हो जाएगा 75 plus ये हो जाएगा 300, है ना? 375 divided by 100 will be equal to 3.75. सिंस यहाँ पे सारे ही के सारे मिलीलीटर्स में है, सो आपको वहां पे बैलेंस करने की जरूरत है. The milliliter from here, the milli from here, and the milli from here, they will cancel each other out. ठीक है? You don't have to worry about the milli. कहाँ मिस्टेक हुई प्रिया आपसे? I took the volume wrong. You wrote the volume wrong. Okay. चलिए, next is stoichiometric calculation. In stoichiometric calculation, first of all, you have to understand what a chemical reaction means. Now, in stoichiometric calculation, one thing that you don't, I will tell you many a times, but ये बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए कि every time in stoichiometric calculation, the equation should be always balanced. ठीक है? So in each of the questions, even if they have given the stoichiometry as 1, 3, and 2, please check whether it is balanced or not balanced. Okay. So anything will start. Whatever you are going to do in stoichiometric calculation, all the things they will start only after balancing the chemical equation. ठीक है? So कोई भी सवाल हो, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले you have to balance the chemical equation. Okay. Now what does the chemical equation mean? If you have 1N2 plus 3H2 gives you 2NH3, what does it mean? It means one molecule of nitrogen, N2, 3 molecules of H2 gives 2 molecules of NH3. In terms of moles, it means 1 mole of N2 reacts with 3 mole of H2 to give 2 moles of NH3. In terms of mass, if you see 1 into the molar mass of nitrogen reacts with 3 into molar mass of hydrogen. ठीक है? तो यहाँ पे जो mass वाला केस है ना, you can see that it is not having the simple ratios. Here it is 1:3. Here also it is 1:3. Here if you see mass of nitrogen, the molar mass of nitrogen will be obviously different than the molar mass of hydrogen. You can write this also. What is the molar mass of nitrogen? Tell me. 14. Molar mass of nitrogen? 28. Molar mass of hydrogen will be equal to how much? 2 H2. है ना? Molar mass of NH3 will be how much? 17. सही है? है ना? So as you can see, these ratios are not matching. That is why we never do stoichiometric calculation using mass. ये कभी नहीं करते हैं हम लोग. Okay, we always you will be using moles. So हमेशा क्या use करना है? We are going to use moles. So case 1, when the amount of only one species is given, they can give you one amount of one reactant, or they can give you the amount of one of the products. ठीक है? And product का amount देके वो पूछेंगे कितना reactant use होगा, and they will give you the amount of reactant and they will ask you how much product will be used. Okay, so when amount of only one species is given, you can use a simple formula. If you have XA plus YB giving you ZC, then the number of moles of A divided by the coefficient X will be equal to number of moles of B divided by the stoichiometric coefficient phi, and number of moles of C divided by the Z. ठीक है? The number of moles of A upon X, number of moles of B upon its stoichiometric coefficient will be equal to the number of moles of C upon its stoichiometric coefficient. ठीक है? So once you have this equation balanced, उसके बाद ही आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा. Okay? Now please write this question.
The moles of methane required to produce 81 gram of water after complete combustion is dash into 10 to the power minus 2. You have to calculate the moles. Okay? Of methane required. That means they're asking about reactant to produce 81 gram of water. They have given a product. You have been given amount of only one species. Okay? Write this question. इसको discuss करेंगे. फिर अगला सवाल आप लोग कीजिएगा. The moles of methane required to produce 81 gram of water after complete combustion. The moles of methane required to produce 81 gram of water after complete combustion. चलिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखना है. You will write the equation CH4 plus 2O2. 2O2 तो भी आपको पता नहीं चलेगा. You will write CH4 plus O2. O2, why O2? Because combustion is happening. Combustion means you have to do reaction with oxygen. Gives you 1 mole of carbon dioxide and it is going to give you 2 moles of H2O. And once you balance it, you will get 2 moles of O2. Now, here I will write this equation. ये जो equality है ना, this equality I am going to write. Number of moles of CH4 divided by 1, because its stoichiometric coefficient is 1, will be equal to number of moles of O2 divided by the stoichiometric coefficient of O2, that is 2, will be equal to the number of moles of CO2 divided by 1, that is its stoichiometric coefficient, and number of moles of H2O divided by 2. Now, since I have to only deal with CH4 and H2O, क्योंकि उन्होंने H2O का दिया हुआ है अमाउंट और CH4 का पूछा हुआ है, मीथेन पूछा हुआ है और H2O क्या दिया हुआ है. So I will only use this equation and this equation. So number of moles of CH4 will be equal to 81, that is given mass upon molar mass of water. This amount is going to give you the number of moles. है ना? Amount of क्या देगा, number of moles दे देगा. Is divided by 2. Divided by 2, that is the stoichiometric coefficient. It is equal to what? Number of moles of CH4 divided by 1. That means number of moles of CH4 will be equal to 2.25. इसको अगर आप divide कर दीजिए कितना मिल जाएगा आपको? 2.25. And if you convert 2.25 in the terms of 10 to the power minus 2, you will get 225 into 10 to the power minus 2. So this 225 is the, यहाँ पे आपको 225 लिखना है. That's it. Please write this down. समझ के कीजिएगा. Also, what you all should do ना, जब भी आप कॉपी कर रहे हैं किसी चीज को, so first of all read the complete thing. जब तक आपको समझ में ना आ जाए, read the complete thing. ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट डाउन करने लगे. Read the complete thing and once you have done reading, then write on your own. फिर आप स्क्रीन में देख के मत लिखिए. You write on your own. Read once or twice or thrice. जो भी टाइम लगना चाहिए आपको पढ़ने में लगना चाहिए, फिर लिखने में आप अपने हिसाब से लिखिए, तभी ज्यादा याद भी रहेगा. And if you start copying one line, then again you will see one line, and then again you will see one line, then it is not going to be of any use. Then everyone, yes, now please tell me. Okay, still writing. Okay, Hamza. Those who did not understand the equality, please see.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मीथेन का कितना है, इट इज 1, will be equal to the number of moles of O2 divided by the stoichiometric coefficient, and this will be equal to the number of moles of CO2 divided by its stoichiometric coefficient. And this will also be equal to the number of moles of H2 divided by its stoichiometric coefficient. Now, since we have to deal only with methane and water, because methane पूछा हुआ है और water दिया हुआ है, I don't need number of moles of O2 and number of moles of CO2 in my calculation. हमारे calculation में जरूरत नहीं. That is why I have written number of moles of CH4 will be equal to, this is the given mass, this is the molar mass. ये आपको क्या दे देगा, this is going to give you the number of moles of H2O divided by 2. Got it, Hamza? Yes or no? Please tell me. Yes, sir, got it. Okay. All of you done? Yes or no? Please tell me. Yes, Done, sir. Done? Yes, sir. ठीक है. Okay. चलिए इसको तो हम खुद का बना देते हैं आप लोग के लिए. See here. 120 gram of an organic compound contains only carbon and hydrogen. क्या है इसके पास, सिर्फ कार्बन है एंड हाइड्रोजन है. It gives 330 gram of CO2 and 270 gram of water on complete combustion. Complete combustion में क्या देता है? It gives 330 gram of CO2 and 270 grams of water. The percentage of carbon and hydrogen respectively are. First thing is that you will see the options. Option में you have 25, 40, 60 and 75. That means if you calculate only the percentage of carbon, सिर्फ अगर आपने कार्बन को भी कैलकुलेट कर लिया, then also you are going to get the right answer, है ना. इसमें ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शन में सेम अमाउंट ऑफ कार्बन दिया, सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया. ऑल ऑफ द परसेंटेजेस आर डिफरेंट. दैट मींस आपको कोई एक ही कैलकुलेट करना है. आइदर यू कैन कैलकुलेट कार्बन और हाइड्रोजन. आई एम गोइंग टू कैलकुलेट कार्बन. व्हाई कार्बन? बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2, देखिए जो भी कार्बन में CO2 आने वाला है, दैट विल बी ओनली ड्यू टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन A. A is what? A is my organic compound that is of 120 ग्राम. ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CH4, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 1 मोल ऑफ CO2. ठीक है, इफ यू हैव C2H6, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ CO2. ठीक है, so it is directly proportional to what? The number of moles of carbon that is present in the organic compound. So I am starting with carbon. Number of moles of carbon in CO2 will be equal to the number of moles of carbon in A, that is my organic compound. Now what is the number of moles of carbon in CO2? Number of moles of, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? Number of moles of CO2. If I have 1 mole of CO2, that means हमारे पास क्या है? I also have 1 mole of carbon. सही है? Yes or no? Please tell me. Is it right? If I have 1 mole of CO2, that means इसमें क्या है? 1 मोल कार्बन का है. And how many moles of oxygen? Tell me, guys. How many moles of oxygen? 2. 2. Similarly, अगर आप water के लिए अगर calculate करते हैं, if I have 1 H2O, so this 1 mole of H2O has dash hydrogen. Tell me, कितने hydrogen है इसमें? How many moles of hydrogen? 2. हाँ, ठीक है. Now I calculate the number of moles of CO2, that is equal to 330 by 44, which is equal to 30 upon 4. So number of moles of carbon will be also equal to what? 30 upon 4. Now I have got the number of moles of carbon. I will calculate the mass of carbon. Mass of carbon will be equal to how much? 30 upon 4 into the molar mass, that is 12, and 30 into 3 will be equal to 90. So this is the mass of carbon atom. यहाँ पे जो mass है product में, the same mass will be present in what? The organic compound. So percentage of carbon atom will be equal to the mass of carbon divided by mass of compound. Mass of carbon मिला था हमको 90 ग्राम. Mass of compound is 120 ग्राम. So 90 upon 120 into 100, that is 3 by 4 into 100, that is equal to 75%. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. अब देखिए ये नया टाइप का सवाल है ना. आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए. प्लीज रीड इट, डोंट राइट. एंड वंस यू आर डन रीडिंग, देन यू विल राइट इट ऑन योर ओन. फिर स्क्रीन में देखने की जरूरत ना पड़े. एक बार अच्छे से 5 मिनट, 3 मिनट, 2-4 मिनट ले लीजिए, पढ़िए अच्छे से, उसके बाद फिर अपने आप से लिखिए. ओके, प्लीज डोंट राइट नाउ. स्क्रीन में देख देख के नहीं लिखना है, आपको रिकॉल करके लिखना है. ओके, यू रीड इट कंप्लीटली एंड देन फिर उसके बाद आप लोग आंसर लिखो. स्टेप्स क्या है उसमें? हम स्टेप्स बताते हैं जो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी. पहला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2. ये आपको क्या देगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन. यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन से आपको कहां जाना है? द मास ऑफ कार्बन, और मास ऑफ कार्बन से आपको जाना है परसेंटेज ऑफ कार्बन. दिस इज द चेन 1, 2, 3 and 4. इसको बल्कि लिख लीजिए आप लोग, है ना. इसको लिख लीजिएगा अगर
कीप द बिग पिक्चर इन योर माइंड, तो फिर उसके बाद दूसरे इसी तरह के दूसरे सवाल भी आपसे हो पाएंगे, बिल्कुल एक ही सवाल तो आप बिल्कुल याद करके रख लीजिएगा CO2 के मुताबिक, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो प्लीज रिमेंबर द बिग पिक्चर कि किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स से, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, फिर वहां से मास ऑफ एलिमेंट, फिर वहां से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। सर ये एक बार फिर से समझा दोगे कैसे करो? कौन ये वाला सवाल क्या पूछा हुआ है इसमें, टेल मी। परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन वेयर? सर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नाउ if I am what is happening to that organic compound, that organic compound is undergoing complete combustion, यस ठीक है। that means अगर उसमें कुछ भी कार्बन होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, करेक्ट है। यस now I calculate first of all number of moles of carbon dioxide, वो calculate कर सकते हैं because they have given us the number of moles of carbon dioxide, yes or no? यस सर। okay, and I got number of moles of carbon dioxide is equal to 30/4, कितना मिला हमें? 30/4। okay, so number of moles of carbon will be equal to how much? सेम ही सर 30/4। सेम होगा, है ना, बिकॉज उसमें एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स 1 कार्बन, जितना Yes. मोल्स है ना सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकल गया, है ना। अच्छा, यस ये जो CO2 आ रहा है, CO2 में जो कार्बन आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। यस दैट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, 30/4। यस उसका मास निकाल लिया हमने, 30/4 into 12, 30/4 is the number of moles multiplied by the molar mass, I got the mass of carbon that is present in organic compound, सही है। यस सर। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 परसेंटेज निकल जाएगा। आपके मार्क्स है मान लीजिए आपने 55 से ऊपर ना 60, टोटल मार्क्स था 70, है ना, तो मास ऑफ कार्बन ना निकल गया परसेंटेज। ओके। After that, you will write this question, all of you, and you will do this question. If a rocket runs on a fuel C15H30 and liquid oxygen, the weight of oxygen required and CO2 released for every liter of fuel respectively are. यहाँ पे you have been given, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले सवाल पढ़िए, उसके बाद बताइए क्या दिया हुआ है। What amount is given, किसका अमाउंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, इफ रिएक्टेंट देन रिएक्टेंट में किसका अमाउंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट में किसका अमाउंट दिया हुआ है।
जी आई होप यू आर डन विद द फिफ्थ वन। सिक्स्थ क्वेश्चन को लिखिए। If a rocket runs on a fuel say 15H30 and liquid oxygen, the weight of oxygen required and CO2 released for every liter of fuel respectively are, tell me, amount किसका दिया हुआ है, reactant and product में से किसका दिया हुआ है? If reactant, then what reactant they have given the amount for? Given समझ में आना चाहिए सबसे पहले. Tell me in chat, they have given the amount of what? Reactant में क्या reactant है? There are two reactants here ना, fuel है and you also have oxygen. So from the reactants किसका दिया हुआ है, fuel का या फिर oxygen का? Yeah, very good. Volume of fuel is given and they have also given what? The density of fuel. Since they have given the density of fuel, that means I have also the mass of fuel. अगर आपके पास mass है, that means number of moles of fuel भी है आपके पास, right? चलिए तो सबसे पहले चलिए you have these options and also always look at the options, okay? If you have options, always look at the options. 1188 2592 2376 and 3429. That means किसी एक का भी निकाल देंगे तो हो जाएगा. If I will calculate the weight of oxygen required or I will calculate the amount of CO2 release, कुछ भी निकालिएगा, किसी एक का भी नहीं हो जाएगा ना. 1296, हाँ, everything is different. चलिए सबसे पहले तो बैलेंस कीजिए इक्वेशन को. बैलेंस द इक्वेशन and tell me the amount, tell me the stoichiometric of O2. O2 कितना इस्तेमाल हो रहा है. रिएक्शन तो लिखना आ जाएगा ना आप लोगों को. See, reaction will be C15 H30 plus O2 gives you CO2 plus H2O. ठीक है, तो C15 है, that means 15 moles of carbon dioxide. H30 है, that means 15 into 2 30 हो जाएगा, right? अब बताइए यहाँ पे कितना आएगा ये. What is this amount? The blank. Balance the oxygen, tell me, कितना आना चाहिए ऑक्सीजन. यस कृष्णा, वेरी गुड. चलिए यहाँ तक तो आपने कर लिया, ठीक है. Now what you need to calculate? You need to calculate the number of moles of the fuel. Number of moles of the fuel calculate कीजिए. वही सेम चीज करना है. This divided by the stoichiometric coefficient number of moles of this, number of moles of this divided by the stoichiometric coefficient number of moles of this by stoichiometric coefficient. You have been given the mass of fuel और आपको weight of oxygen required निकालना है. इन दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा. Number of moles of the fuel divided by stoichiometric coefficient will be equal to number of moles of O2 divided by stoichiometric coefficient क्या है, 45/2. ठीक है, तो number of moles of fuels आपको निकालना है. 45/2 तरह मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा. प्लीज कैलकुलेट कीजिए इसको. लेट मी सी हमने कितना कैलकुलेट किया. चलिए हमने गिवन निकाल दिया आपका मास ऑफ फ्यूल, मोलर वेट ऑफ ये भी निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स. चलिए ये देखिए, दिस इज द मास ऑफ फ्यूल, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्यूल. नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकल जाएगा. ठीक है, टेक 2-3 more minutes. एक आपको अंदाजा लग जाएगा, लाइक 1000 के अंदर होगा
या फिर 3000 के ऊपर होगा या फिर 2000 के बीच में होगा, कुछ इस तरह से अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, थिंग एल्स। Okay, we have got 3 answers. Okay. Okay, Aditya. Let us see, Aditya. बाकी लोग क्या आ रहा है आंसर? Okay, Priya. Waiting for others, guys. What happened? Adriel, Hamza, and Krishna. ये कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। What is the mass of O2 that you guys are getting? Huh. Yes, correct, Adriel. 2592 grams. This I have multiplied by 32. Why? Because this is the number of moles. यहाँ से calculate हुआ है. Mass calculate करने के लिए you have to multiply by the molar mass of O2, that is 32. So option C is correct. 5.12 क्या आया था? No, Krishna, I don't know why you are writing 5.12. 5.12 क्या था? It would not be even the moles of. Krishna, calculation में आप कहीं पे mistake कर रहे हैं. चलिए ये calculate कीजिए. On complete combustion of 0.30 grams of an organic compound, it gave 0.20 gram of carbon dioxide and
0.10 gram of water. The percentage of carbon in the given organic compound is dash. This is similar to the previous question that we did. Please try this one. It is very similar to the previous one, the fifth question. देखिए वही करना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड द परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना ना. So we'll start with carbon dioxide. You have carbon dioxide. We'll calculate the number of moles of carbon dioxide. ठीक है. From number of moles of carbon dioxide you will get number of moles of carbon. जो भी number of moles of carbon dioxide होगा वही आपका number of moles of carbon होगा. यहाँ से फिर आपको क्या निकाल देना, यहाँ से आपको निकालना है mass of carbon. And यहाँ से क्या निकालना आपको, percentage of carbon. Okay Aditya. We'll see. Let us see. बाकी लोग आंसर करें. Number of moles of carbon dioxide, that will be equal to number of moles of carbon multiplied by 12, that will be equal to the weight of carbon, then divided by 0.30 and then multiply by 100. बहुत आसान है, प्लीज कीजिए इसको. Number of moles of carbon dioxide will be equal to how much? 0.20 divided by 0.20 divided by how much? What is the molar mass of carbon dioxide? 44. 44. ठीक है. And this will be equal to, ये number of moles of carbon भी इतना ही होगा, 0.20 divided by 44. मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 12. कितना आ जाएगा ये? This will be equal to, अच्छा चल ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए. परसेंटेज ऑफ कार्बन कर लेते हैं. परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू द मास ऑफ कार्बन. मास ऑफ कार्बन कितना है? 0.20 into 12 divided by 44. This mass of carbon divided by
the complete mass of the organic compound. Mass of organic compound is 0.30 multiplied by 100. क्या हो जाएगा ये? This will be equal to 0.20 into 12 divided by 44 into 0.30 into 100. इसको कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, कितना हो रहा है ये? Yes, correct. Adriel. Yes, Priya, correct. Waiting for some more answers. Yes, Krishna. Yes, Hamza, correct. आदित्य, आपका कितना आ रहा था आंसर? देखिए सही है आपका या नहीं सही है? 10 कैसे आ रहा है आपका? इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है? $18 आएगा आंसर. ओके आदित्य, आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट 18. Will be 18.1 something. This will be equal to 18. Calculate this one. CNG is an important transportation fuel. When 100 gram of CNG is mixed with 208 grams of oxygen in vehicle, it leads to formation of carbon dioxide and water and produces large amount of heat during combustion. Then the amount of carbon dioxide produced in grams is equal to how much? ठीक है, amount of carbon dioxide. उन्होंने बोला assume CNG to be methane. That means you have CH4 plus O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको बैलेंस कर लीजिए एंड देन यू हैव अच्छा 2 चीज दिए हुए हैं ना. First of all, calculate the number of moles of. Aditya, can you send me how you have calculated? Send me on WhatsApp 7530. Show me the calculation. सर आप अपना नंबर इस पे जूम पे मैसेज कर सकते हैं. नो मैम, ये है ना, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे नंबर?
अच्छा मैसेज कर दे क्या हम? हाँ ओके सर, ठीक। Can you show me the calculation? करेक्ट आर्टिकल, ये आपने सही पकड़ा है। ठीक है। आदित्य सी द फर्स्ट थिंग इज दैट आपने जो कैलकुलेट किया वो ग्राम्स होगा। सी हमने यहाँ पे क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। ये व्हाट इज दिस? एन ए, यस आदित्य, यस सर। व्हाट इज एन ए? ये यू आर यूजिंग दिस इक्वालिटी ना, राइट? Yes. आई होप यू आर यूजिंग दिस इक्वालिटी जी। व्हाट इज दिस एन ए, एन बी, एन सी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी एंड सी। नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो फिर आपने जो इक्वालिटी यूज किया उसमें क्या है? मास तो नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, राइट? यस सर। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले देखिए आप लोग, द थिंग इज दैट in this question you have to use the concept of limiting reagent, because हम जो cases अभी तक पढ़ रहे थे that was when amount of only one species is given, तब we can simply use this। जब लेकिन जब amount of two species is given, यहाँ पे उन्होंने they have given 100 gram of methane and 208 grams of oxygen, जब दोनों दिया हुआ है तो first of all you have to calculate the moles upon coefficient ratio। you will balance this equation first of all। आपने balance किया है, चलिए balance कर लिया है आपने। you will get 2 moles of H2O and 2 moles of O2। Now CH4 का number of moles कितना हो जाएगा? number of moles of CH4, moles of CH4 divided by the stoichiometric coefficient, number of moles of O2 divided by the stoichiometric coefficient। इन दोनों को पहले कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। Calculate the ratio of both of these things। number of moles of CH4 will be equal to what? 100 upon CH4 का मास कितना हो जाएगा? कार्बन 12 और 4 16। This is the moles upon coefficient ratio, 1 का 1 ही हो जाएगा, there is nothing else। ठीक है, this is the number of moles divided by 1, तो यही आ जाएगा। number of moles of O2 will be equal to how much? 208 upon 32 divided by 2, कितना आ जाएगा ये? 208 divided by 32 का डबल कितना हो जाएगा? 6 और इधर 4। बताइए कौन सा बड़ा है? Is this one bigger, मीथेन वाला या ऑक्सीजन वाला? कौन सा छोटा है इसमें से, क्या लग रहा है आपको? Which is smaller? CH41 is smaller और O2 वाला छोटा है? O2। O2 वाला छोटा है ना, that is why we will say therefore O2 will act as limiting reagent। limiting reagent का मतलब we have, जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको बनाना है 3 कप चाय, छोड़िए कितना कप चाय बनाना वो छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपके पास है यहाँ 5 कप ऑफ मिल्क, ठीक है, बट यू ओनली हैव 1 spoon of what? You only have 1 spoon of टी लीव्स। चाय पत्ती आपके पास कितना? 1 ही चम्मच है, तो कितना चाय बनेगा? एक ही कप चाय बन पाएगा ना। अच्छा अच्छा चाय आपको कितना बनेगा? 1 ही कप बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? द प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमारा चाय बनने वाला है, दैट इज बीन लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ टेबल स्पून ऑफ अमाउंट ऑफ टी दैट इज प्रेजेंट। अगर टी हमारे पास ज्यादा रहता तो हमारे पास प्रोडक्ट भी ज्यादा बनता, तो प्रोडक्ट इज लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ टी। अमाउंट ऑफ टी कम था, दैट इज व्हाई इट इज बीन लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेशियो कम होगा that will be acting as the limiting reagent। Here what will be acting as limiting reagent? O2 will be acting as a limiting reagent। And please remember, even though we had 5 cup of milk, we only had 1 tablespoon of tea, the product, that means 1 cup of tea, it was determined by the limiting reagent। So limiting reagent is the one which will determine the amount of product। ठीक है, तो यहाँ पे O2 वाले को ले लेंगे हम लोग, this is the moles upon
coefficient का ratio, and it will be equal to the amount of CO2 formed, that is number of moles of CO2 formed divided by 1, that is the coefficient of CO2. तो number of moles of CO2 कितना हो जाएगा? The same thing will be equal to 208 divided by 64. ये कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना इन ग्राम्स. अच्छा, फिर मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको किससे? मास निकाल लीजिए, 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. You'll get this value as 143 ग्राम. समझ में आया सबको? ये सुनो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग पढ़ेंगे, है ना. ये सवाल गलती से पहले आ गया, बट आई होप स्टेप समझ में आया है. मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट रेशियो निकालिए. जो भी मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो कम होगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा दैट विल बी डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है, तो बेसिक कांसेप्ट यही है. Okay, let us see another question. एक सेकंड, पहले कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे फिर. चलिए कुछ टॉपिक्स ही कवर कर लेते हैं पहले, है ना. एक टॉपिक है परसेंटेज यील्ड. व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? परसेंटेज यील्ड क्या होता है? दैट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल प्रोडक्ट फॉर्म. एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है, यू आर इन द लैब, यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, देन यू आर taking some amount of reactant, then you are taking some amount of another reactant, you are reacting it, and then you are forming the product. And once you form the product, you will weigh the product कि कितना product हमारा बना है. You are weighing the product, how much amount of product is being formed, and that is the actual product form. ये usually given होगा आपको. Why it will be given usually? It will be usually given because आप experiment तो करने जा नहीं रहे, है ना. So someone has done the experiment and they have given the actual amount of product that is being formed, and what you will be required to do is to calculate the expected theoretical product form, which will be calculated using the stoichiometric calculation. इन दोनों को डिवाइड करके into 100 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा percentage yield. For example, here we have a question. In the above reaction, 3.9 gram of benzene on nitration gives 4.92 gram of nitrobenzene. ये क्या है आपका? This is actually में हुआ था, ठीक है. क्या हुआ? Actually में ये हुआ 3.9 gram of benzene somebody took, they did nitration on it, and they got 4.92 gram of nitrobenzene. So actually you have been given the percentage yield of nitrobenzene in the above reaction is dash percentage. So you have to calculate the expected theoretical product form. Expected theoretical product form यानी कि if we have 1 mole of benzene C6H6, इससे हमको क्या मिलेगा? I will get 1 mole of नाइट्रोबेंजीन ऑल्सो, है ना. तो इस रेशियो को लेके हमको क्या निकालना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन एक्सपेक्टेड था. सो इफ यू सी द कैलकुलेशन हियर, सी दिस इज द मास ऑफ benzene that we have taken 3.9 gram. This is the molecular weight of benzene, that is 78. Mass of NO2 that has been found expected है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है. दिस इज एक्सपेक्टेड x, and the molar mass of nitrobenzene is 123 grams. So the number of moles of C6H6 upon 1 is equal to number of moles of nitrobenzene upon 1, because equation के हिसाब से this is 1:1 का ratio. Now number of moles of C6H6 कैसे निकलेगा? 3.9 upon 78, which will be equal to number of moles of nitrobenzene that has been formed theoretically. Mass of nitrobenzene that has been formed will be equal to the number of moles multiplied by, what is this? Tell me guys, ये क्या है? Molecular weight of nitrobenzene. Yeah, very good. Molecular weight of nitrobenzene, which is equal to, which is giving me 6.15 grams of nitrobenzene theoretical है आपका. Now percentage yield will be actual upon theoretical. Actual था 4.92 divided by theoretical, that is 6.15 into 100. इसको कैलकुलेट करके आपको 80% मिलेगा. ठीक है, so please read this away. इसको पढ़िए एक दो बार, उसके बाद खुद से करने की कोशिश कीजिएगा. See, usually in physical chemistry ना, I take this average of 12 to 13 questions. ठीक है, 12 to 13 क्वेश्चन में हर एक सवाल में लगभग 5 मिनट दिया आपने, तो इससे कितना हो गया? 60 मिनट्स. एंड 30 मिनट्स का आपका क्या रहता है? 30 मिनट्स का कुछ थ्योरी पार्ट है ना, जैसे मोलरिटी मिक्सिंग पढ़ाया हमने, डाइल्यूशन पढ़ाया हमने, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ाया हमने, उसके बाद परसेंटेज यील्ड पढ़ाया, फिर लिमिटिंग रीजन पढ़ाएंगे. उन सबको पढ़ाने में 30 मिनट. तो आई विल बी टेकिंग एटलीस्ट 12 to 13 क्वेश्चंस डेली, एंड देन 30 मिनट्स आपका थ्योरी में जाएगा इधर उधर. ओके,
इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, टाइम का अच्छा खासा इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे, कम से कम थ्योरी में। देखिए सब नहीं, एस वन प्लीज टेल मी। Still writing, write it fast. नेक्स्ट टाइम आपके लिए आसान हो जाएगा, जो नोट्स है ना, आई मीन ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट यू विल बी गिवन एज नोट्स। तो आपको एक बार नोट्स पढ़ के रखिएगा तो समझ में भी आपको जल्दी आएगा, एंड फिर यू विल आल्सो हैव द ऑल द क्वेश्चंस। एक बार आप क्वेश्चन घर में पहले ही ट्राई करके रखिएगा, एटलीस्ट पढ़ के तो रखिएगा, उसमें और जल्दी हो जाएगा। चलिए मूविंग ऑन। दिस इज अनदर क्वेश्चन, परसेंटेज यील्ड का। स्क्रीनशॉट लेके इसको होमवर्क लिख लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ के क्लास को खत्म करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। See, limiting reagent. Now, in So limiting can you just reagent, show it again? no problem. What do you want to see? The question or the answer? No, sir, the questions. Done, sir. Screenshot. Done? Okay. Limiting reagent. What is limiting reagent? Limiting reagent तब use होगा when you have been given the amount of, देखिए balance of reaction तो करना ही करना है, systematic calculation में balance करना ही करना है. If the amount of 2 or more reactant is given, then determine the limiting reagent. जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा amount of reactant is given, then you have to calculate what? You have to first of all determine the limiting reagent. The reactant with smallest value of mole upon coefficient ratio. Okay, the smallest value of mole upon coefficient ratio will be the limiting reagent. And once you have determined the limiting reagent, calculate the amount of product using limiting reagent. किस तरह से? Mole upon coefficient of limiting reagent will be equal to mole upon coefficient of the product. ठीक है? For example, you have this question: production of iron in blast furnace follows the following equation: Fe3O4 solid plus 4 carbon monoxide gives Fe and 4 moles of CO2. When 4.64 kg of Fe3O4 and 2.520 kg of CO are allowed to react, then amount of iron produced is how much? उन्होंने क्या पूछा? What is the amount of iron produced? यहाँ पे they have given the amount of Fe3O4 and the amount of CO also. तो दो दिया है, that means you have to calculate what? You have to calculate the limiting reagent. Limiting reagent कैसे calculate करेंगे? Moles upon, you have to see what? Moles upon coefficient का ratio. Moles upon coefficient का ratio. Now, first of all, you have to calculate the molar mass of Fe3O4. आपको 232 मिल जाएगा. Molar mass of CO you will get as 28. Now, you will calculate the moles of Fe3O4, 4640 upon 232. Moles of CO will be equal to 2520 upon 28. Now, moles upon coefficient ratio देखते हैं, ठीक है? तो for Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 के लिए this is 4640 upon 232. Now for CO, 4 CO use हो रहा है. If you see the equation here, 4 moles of CO. So this will be equal to 2520 upon 28 into 4. अब इसमें से बताइए कौन बड़ा है? What do you think? Sir, 4 CO. 4 CO बड़ा है, पक्की बात. सर Fe3O4 Fe3O4 बड़ा है. किसी को आंसर मिला? नहीं मिला?
28 into 4 कितना होगा? 112. 112. The 4CO will be 4CO is greater, ना? Okay, 4CO is going to be greater. देखिए 112 का डबल कितना हो जाएगा? 224, which is very near to what? 232. लेकिन 2520 को डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? It will be equal to 5000 से भी ज्यादा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा है, ठीक है? सो ऑब्वियसली 4CO is going to be greater. स्मॉलर क्या हो गया आपके पास? 4304. So that means this is my limiting reagent. ये क्या है आपके पास? This is your limiting reagent, है ना? Now आपको क्या निकालना है? They are asking the amount of iron form. You have 4640 upon 232 will be equal to the number of moles of Fe divided by, what is the coefficient? Coefficient will be 3, na? 3. The number of moles of Fe will be equal to 4640 divided by 232 into 3 in, this is the number of moles. Mass निकालना है, moles निकालना है. Amount of iron produced is, ये तो फिर आपके पास ग्राम्स में ही होगा अमाउंट. थ्री 360. Mass of Fe will be equal to 4640 into 3 into 56, na? Okay, yeah, 56 divided by 232. Yeah, correct. This is equal to 3360 grams. All of you understood this one, ना? ये बताइए, ये समझ में आया नहीं समझ में आया? Yes or no? Please tell me. Priya, Krishna, Hamza, Adriel. Yes, All of you understood this Yes, one? sir. है ना? ये समझ में आया? ठीक है. Sir, Again, can you show same the thing. question? Yeah, yeah, sure. All of you done? Yes or no? Please tell me. Is everyone done? Ditya, Adriel, Hamza, Krishna, Yes. Priya. Yes, sir. Okay, fine. That's it for today. I think schedule के मुताबिक I think we have our next class on. This is our next class. You will obviously you will have a class on Saturday now.